Hi friends, welcome back. So in this lecture we are going to start with chapter 4, that is metals and non-metals. And now first of all we will differentiate metals and non-metals on the basis of their physical properties. So first of all हम क्या क्या properties करेंगे जो metals और non-metals को differentiate करेगा. अगर हम देखें तो metals क्या होते हैं? We know metals are reactive. रिएक्टिविटी के बारे में बाद में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट देयर साउंड. अगर हम किसी मेटल की बनी हुई चीज को बीट करें तो वो साउंड करती है, और अगर हम किसी नॉन मेटल को बीट करें तो वो साउंड नहीं आती है उसमें से. मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स साउंड नहीं करते, व्हाइल मोस्ट ऑफ द मेटल्स में साउंड होती है. सो द मेटल्स आर सोनोरस while the non-metals are non-sonorous. राइट. मेटल्स क्या करते हैं? साउंड करते हैं, while non-metals साउंड नहीं करते मोस्ट ऑफ द non-metals. राइट. अब अगर हम दूसरी बात करें, सेकेंड पॉइंट, तो जो मेटल्स होते हैं उन्हें हम हीट करके उनका शेप चेंज कर सकते हैं. देयर शेप कैन बी चेंज्ड. नॉन मेटल्स को अगर हम हीट करेंगे तो वो पिघलेंगे नहीं. नॉन मेटल्स को अगर हम बीट करेंगे तो वो पाउडर बन जाएगा, while मेटल्स को हम थिन शीट्स में, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो 2 पॉइंट्स आर malleability and ductility. malleability क्या होता है कि किसी सब्सटेंस को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर पाए, एंड डक्टिलिटी इज हम उसे थिन वायर्स में कन्वर्ट कर पाए. malleability is a property of substance to convert it into thin wires, while ductility, it is its ability to be converted into thin wires. malleability हम लिखें sheets and ductility wires, while non metals में ये नहीं होता है. राइट. ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई हमारी. जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, while non metals are poor conductors of heat and electricity. Metals are good conductors whereas non metals are poor conductors. And fifth point, metals are hard. हम सभी को पता है मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, while non metals, most of the non metals are soft. Some of the exceptions are there that we will study in our next slide. अगर हम बात करें हार्ड होने की, तो एल्यूमिनियम इज अ मेटल बट इट इज नॉट हार्ड. राइट. एंड सम नॉन मेटल्स आर देयर व्हिच आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम बात करें कि मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है, देन इट इज गोल्ड. गोल्ड को हम सबसे थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इट्स नॉट रॉन्ग टू से दैट द वायर ऑफ गोल्ड इज द थिनेस्ट वायर दैट कैन बी मेड. जो गोल्ड होगा उससे सबसे ज्यादा थिन वायर बनेगी. क्लियर. Now let's move to NCERT. Now you are familiar with the number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials are given. So we know iron is a metal, shiny, while coal is dull, sulfur is dull, aluminium is shiny, and copper is again dull. Hardness की बात करें तो iron is hard, coal is not hard, sulfur is again not hard, aluminium is
not hard. Aluminium is exception. Copper is again not hard. Copper is used for coating of wires, or we can say copper is used for making wires. Copper is used in wires. Used in wires. Clear? So can you name the materials which are metals? Metal कौन कौन सा है इसमें? Iron is metal, aluminium is metal, copper is metal. Now physical properties of both metals and non-metals. Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an iron article made up of iron like spade, shovel and axe? किसके बनते हैं? आयरन के बनते हैं सारे. Do you find change in the shape of these articles? Yes, we can. Now activity is given. Take a small iron nail, coal piece, a piece of thick aluminium wire and a pencil lead. Now beat the iron nail with a hammer. अब यहाँ क्या होगा? उसकी शेप चेंज हो जाएगी. आयरन वायर की भी हो जाएगी, लेकिन जो पेंसिल है इट विल ब्रेक डाउन. ये पाउडर बन जाएगी अगर हम ज्यादा ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो. क्लियर? नाउ इफ यू वांट टू फिल अप दिस आयरन नेल, चेंज इन शेप मींस फ्लैटन्स. हमें पास दो ऑप्शन है, तो फ्लैटन्स या ब्रेक इनटू पीसेस. कोल क्या होगा? इट विल ब्रेक इनटू पीसेस. Aluminium wire will again flatten and pencil lead will break down. I hope this is clear to you. So you saw that the shape of iron nail and aluminium would change on beating. If you are beaten harder, that can be changed into sheets. So the property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. Important definition. This is characteristic property of metals. Now, as you must have noticed, materials like coal, pencil do not show this property. Can we call these metals? No, these are not metals. Can you hold a metallic pan which is without a plastic or wooden handle? No, we can't handle. वो गर्म हो जाएगा. Pan is made up of iron, and iron is a good conductor of electricity and heat. So the pan will got hot and we will not be able to hold it. वो पैन गर्म हो जाएगा और हम उसे बिना वुडन हैंडल के या प्लास्टिक के हैंडल के पकड़ नहीं पाएंगे. Try to list some other experience in which a wooden or plastic handle protects you from being hot while handling hot things. On the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? Both wood and plastic are poor conductors. So you must have seen an electrician using a screwdriver. Screwdriver पे क्या होता है? पीछे प्लास्टिक का हैंडल होता है, right? So recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not. अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी पिछले साल भी बनाया था, तो उसमें सेम वही मेथड यूज करना है, बस वहाँ पे ये वाली चीजें यूज करनी है. तो जो मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, while नॉन मेटल्स will not conduct. The meaning of recalling our experiences and then of this activity was to show that metals are good conductors of electricity. The property of metals by which it can be drawn into thin wires is called ductility. Again important definition. Malleability होगा thin sheets में, while ductility होगा thin wires में. Let's write ones to learn. Malleability.
How we will define it? The ability of metals or we can say the property of metals to be drawn into thin sheets. And whereas if we talk about ductility, it is a property of metals to be drawn into thin wires. And we have done it. Most ductile metal is gold. Clear? Now the things made of metals produce a ringing sound, and the metals producing sounds are called sonorous. After performing the above activities, we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, and good conductors of heat and electricity. So the materials which generally possesses these properties are called metals, while the rest are non-metals. Exceptions exist. There are some exceptions. The examples of metals are iron, copper, aluminium, magnesium. In contrast, materials like coal and sulfur are soft, dull, break down into powdery mass on tapping with hammer. They are not sonorous and are poor conductors of heat and electricity. We call such substances as non-metals. So the examples are carbon, oxygen, sulfur. All the gases present are non-metals. Metals like sodium and potassium are soft and can be cut with a knife. Mercury is the only metal which is found in liquid state at room temperature. Exceptions are important. Exceptions क्या क्या है? Sodium and potassium are soft metals, while mercury is the only metal which is found in liquid state. हमने क्या पढ़ा था? Metals are mostly solid and are very hard. The exceptions are sodium, Na, and potassium, K. These are soft metals. While if we talk of mercury, only metal that exists as liquid at room temperature. Now I hope the physical properties of both metals and non-metals are clear to you. So that's all for today. In the next video we will do chemical properties of metals and non-metals. Thank you. Stay home, stay safe. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. Thank you once again.